जन्नत लर्निंग की डिजिटल क्लास में खुश आमदीद। ये वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी कोर्स इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 लेक्चर नंबर 20 स्ट्रक्चर एंड यूनियन C++ के लिए है। हमें उम्मीद है कि आपके लिए ये मालूमाती और मददगार साबित होगी। अगर आपने पहले जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल जन्नत लर्निंग को सब्सक्राइब करें। आपकी राय हमारे लिए इंतहाई काबिल सिताइश होगी। A structure is a collection of related data. Items, possibly of different types. Structures are also called records. A structure type in C is called struct. Unlike arrays, a struct is composed of data of different types. You use structures to group data that belong together. For example, if we want to make bank account information in structure, we shall put this information with one variable name. Similarly, students' detail can be saved in one variable. The problem is very simple. We will declare a structure of student with name, course, age, and GPA as data members. In a loop, we will get the data from the user to populate the array. Then, in a loop, we will calculate the total age and total GPA of the class besides determining the maximum GPA in that loop. Finally, calculate the average age and average GPA by dividing the total age and total GPA by the number of students, that is 10. The average GPA can determine the grade of the class. हम नाम कोर्स एज और GPA के साथ तालिब इल्म के स्ट्रक्चर को डेटा मेंबर्स के तौर पर डिक्लेयर करते हैं। एक लूप में हम अरे को पॉपुलेट करने के लिए यूज़र से डेटा हासिल करते हैं। फिर एक लूप में हम इस लूप में ज़्यादा से ज़्यादा GPA का तयन करने के अलावा क्लास की टोटल उम्र और टोटल GPA का हिसाब लगाते हैं। आखिर में तलबा की तादाद से टोटल उम्र और टोटल GPA को तकसीम करके एवरेज उम्र और एवरेज GPA का हिसाब लगाते हैं, यानी टीम क्लास के ग्रेड का तयन और एज GPA से किया जा सकता है।
Thank you for attending the Jannat Learning Digital class. Our mission is to help you achieve academic success and unlock your potential. Our content includes study tips, exam preparation strategies, course overviews, and more. Join our community of motivated learners. Subscribe to Jannat Learning for regular updates and valuable insights. Good luck and goodbye.